directed self-finance courses to equip the dignitaries and obligers. Thank you, sir. A famous saying of Martin Luther King, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. Now we will pray in the lotus feet of Almighty for His blessings. I request all dignitaries to lighten the lamp before the goddess Ma Saraswati and pay their floral homage to her and announce the formal inauguration of the seminar. लगा के रखो वंदना। इस फोन से चेक करा तो बुकिंग या वीणा वरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मातु सरस्वती भगवती ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। विद्यालय जयति जयति
Thank you all for leading this sacred ceremony. It is a time for floral and fragrant welcome of our guests. In this series, I request Professor Sangeeta Singh Ma'am, Head Department of B.Ed, to present a sapling to our chief guest, Sri Ramesh Sharma sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I invite Professor Swadesh Singh, sir, Head Department of Maths, to present a sapling to our President, Dr. D.K. Upreti, sir. Thank you, sir. Now I would like to call Professor B.P. Singh, sir, to present a sapling to our keynote speaker, Dr. Anand Kumar Gupta, sir. Thank you, sir. Thank you very much. I request Professor Anita Singh, ma'am, to present a sapling to Dr. Puneet Khare, sir. Anita Singh, ma'am, present a sapling. Thank you, ma'am. Thank you, sir. As the time is short, so I would like to invite Professor A.P. Singh, sir, Head Department of Environmental Science, Director Self-Finance Courses, and Organizing Secretary of this seminar, for formal welcome of our guests and delegates on behalf of entire team of the seminar and Bareilly College family. Respected chief guest, dignitaries, faculty members, researchers, media persons, students, and dear parents, a very good afternoon to everyone present here. It is an honor and privilege to welcome you all to the International Seminar on Environmental Issues and Challenges in the 21st Century, EICC-2025, being organized by the Department of Environmental Science, Bareilly College, Bareilly, on the momentum occasion of World Environment Day. The theme of this year, End Plastic Pollution Globally. We are deeply honored by the gracious presence of our esteemed chief guest, whose contribution to public service, research, and environmental governance are truly commendable. Honorable Mr. Ramesh Sharma, Sir, IPS Additional Director General of Police, Bareilly Zone, is a distinguished officer known for principled leadership, administrative excellence, and social sensitivity. His presence here signifies the important role law enforcement and civic responsibility play in achieving environmental justice. Dr. D.K. Upreti, sir, emeritus scientist at CSIR NBRI Lucknow, contributing to the advancement of lichenology and inspiring future generation of scientists. Dr. Upreti has spent 3 decades in NBRI, during which he served as director and chief scientist. He explored the application of lichens in environmental monitoring and biotechnology. Dr. Upreti received several prestigious awards, including E.K. Janaki ML National Award for Plant Taxonomy in 2015. Dr. Puneet Khare, an eminent scientist from ICAR ITR, has been at the
forefront of research in environmental toxicology and plastic impact studies. His work offers deep insight into the scientific dimension of plastic pollution and sustainable alternatives. I welcome Dr. Anand Kumar Gupta, Senior Scientist, Indian Institute of Soils and Water Conservation, Agra, who has given his precious time to this conference. We are honored to welcome Dr. Shivam Singh, recipient of the Young Environmental List Award and member of UP State Level Expert Evaluation Committee, Directorate of Environment, Government of Uttar Pradesh. Dr. Singh's expertise and dedication to environmental sustainability to truly commendable. We look forward to his valuable insight and contribution to this conference. Honorable Sri Devmurti ji, owing to his numerous responsibilities, could not grace this conference with his presence. However, his unwavering support and visionary guidance remain our constant strength. It is indeed difficult to imagine the success of any invitation without his invaluable contribution. Several eminent scientists from India and abroad have expressed their willingness to attend the conference in person, but due to the recurrence of COVID-19, they are unable to join us physically, but they will participate in the conference through online mode. Every year, June 5th reminds us of our deep-rooted connection with Mother Earth. The environment is not merely a backdrop to human activity. It is the very foundation of life. From the air we breathe to the water we drink and the soil that feed us. The nature sustains every aspect of our existence. But in return, we have often taken more than we give. The result is evident in the form of climate change, biodiversity loss, and most almighty plastic pollution. The central theme of this year's conference. Plastic pollution has emerged as one of the gravest threats of the 21st century, with over 400 million tons of plastic produced annually. Only a fraction is recycled. This calls for urgent action ranging from policy reform, community awareness, and responsible consumption. This conference is a step toward building that unfilled response. Let us engage in meaningful discussion, exchange ideas, and explore sustainable solutions that can significantly reduce plastic dependence, enhance waste management, and promote biodegradable alternatives. As we celebrate World Environment Day, let us not just reflect but resolve. Let us move from awareness to action in our homes, our institutions, and our policies. The challenge is immense, but so is our collective strength. Let this seminar be a milestone in our journey towards a cleaner, greener, and more sustainable future. Thanks you all, and I wish the seminar great success. Thank you, sir. As we collect all the flowers to make a beautiful flower bunch like that, evaluation of our work does with annual report. In this series, I invite Dr. Anamika Agrawal, Associate Professor, Department of Environmental Science, to recite the annual report of the department. Dr. Anamika. Thank you, ma'am. Respected dignitaries, esteemed guests, honorable faculty members, and dear students, a very warm welcome to all present here. It gives me immense pleasure and pride to present before you the annual report of Environmental Science Department, Bareilly College, Bareilly.
Established in 1987, our department is the only one in the Rohilkhand region offering graduation and post-graduation education in environmental science under the esteemed Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand University, Bareilly. The vision of our department is to provide environmental education not only imparts theoretical knowledge but also empowers students to address real-world environmental challenges. We focus on project-based learning, awareness generation, and innovative course designs to prepare our students as responsible and capable environmental professionals. We are proud to share that many of our students have qualified national level competitive exams like UGC NET, ICAR NET, and GATE. Some have been received international fellowships representing India and global platform. Our faculty members are dedicated researchers and educators, having published more than 100 research papers in reputed national and international journals and authored over 6 books. A significant milestone this year was the granting of 5 patents to our departmental faculty members in the area of environmental management. Our department houses a well-equipped laboratory and rich departmental library, both of which support high-quality academic and research initiatives. In 2024, our department signed an MOU with Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya Sagar aimed at promoting academic and research collaboration. Currently, discussions are underway to establish collaborations with NBRI, IRDR, NBFGR, BBAU, and CDRI. We also plan to launch a new academic journal and a news bulletin in the coming session. The department regularly organizes monthly student seminars to encourage public speaking and enhance awareness of pressing environmental issues. We celebrate major environmental days with great enthusiasm, including World Environment Day, World Ozone Day, Wildlife Week, and World Water Day. This year, we environmental program. On June 3rd, we conducted making, essay writing, and speech competitions for students from various schools and colleges across Bareilly. The event saw enthusiastic participation from around 150 students. On June 4th, we carried forward the momentum with an environmental awareness rally and a tree plantation program flagged off by Dr. A.K. Chauhan and Sri Subhash Mehra, member of Managing Committee, Bareilly College. The rally passed through key routes in the city, drawing public attention. Nearly 200 students participated during distributing pamphlets and promoting eco-friendly practices. Over the years, we have hosted numerous national and international conferences, seminars, and workshops in collaboration with CSIR, NBRI, Nagar Nigam Bareilly, and the State Land Use Board, Uttar Pradesh. One of our significant achievements includes a major research project lead Dr. Jaspal Singh as co-principal investigator funded by the DST, New Delhi, which aims to develop a scientific temper tool. We are proud of our PhD program, which began in 2014, through which Radesh Kumar Yadav, Amrita Singh, and Neha Singh have been awarded doctoral degrees. This year, 11 new students have been enrolled for a PhD program. Several of our students have received prestigious fellowships like Inspire, and notable alumni such as Ravi Kumar Gangwar and Neha Singh have been selected for the Stipendium Hungarium to pursue PhD studies in Hungary. Many others have secured jobs in various environmental aspects. We have always maintained strong ties with the academic and scientific community. We extend our sincere thanks to Professor Anurag Mohan, former principal of Bareilly College, for his unwavering support and guidance. We are also grateful to renowned scientists and academicians, including Dr. Anand Gupta, Dr. D.K. Gupreti, Dr. D.K. Gupta, sir, Dr. Rajesh Bajpayee, Dr. Rahul Bhadoria,
and Dr. R.K. Singh for their constant encouragement. We express our heartfelt gratitude to Professor Nilima Gupta, Vice Chancellor Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya for her ongoing support and motivation. Finally, we extend our deep appreciation to Shri Dev Murthy ji, Honorable Secretary, Managing Committee, whose vision and encouragement have been the cornerstone of our department's progress. In conclusion, the Department of Environmental Science, Bareilly College, Bareilly is not merely an academic unit, it is a hub of innovation, awareness, and research excellence. We pledge to continue making meaningful contributions to the field of environmental science and to society at large. Thank you all for your attention and continued support. Thank you. Thank you, ma'am. Moving a step ahead, it's the time to release the souvenir of the seminar. Souvenir is like the mirror of seminar. Honorable Prime Minister, PM Shri Modi ji launched LIFE, LIFE, Lifestyle for Environment, a global movement of COP26 in Glasgow for mindful and deliberate utilization instead of mindless and destructive consumptions to safeguard our environmental resources from the impact of climate change and inculcating sustainable consumption behavior. So we took a step ahead in this regard to save our trees and paper. My humble request to all the dignitaries, souvenir of the seminar. Thank you, sir. We have several distinguished learned scientists and speakers, online and offline mode. I feel very much obliged to invite our keynote speaker, Dr. Anand Kumar Gupta, sir, Senior Scientist, ICAR Agra. His skills and expertise, EIA, environmental monitoring, sustainability, water and wastewater treatment, etc. Sir, please enlighten us with your environmental friendly researches. Dr. Anand. No, last one. स्लाइड चेंज करने का अच्छा आपके पास ही ऑप्शन है. A very good afternoon to all of you. It's my pleasure to be here as a keynote speaker, and I am thankful to Dr. A.P. Singh sir, Dr. Jaspal Singh, who is my senior from Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, for inviting me to deliver keynote talk. So this is the work what I did during my PhD days in the United States. So I am presenting the whole work here. Okay. So the topic is development of plant-based nanomaterials for the removal of
हाँ वो देखिए चलिए कॉलर में लगा now it's put okay. Hello. Okay, so the topic of my presentation is development of plant-based nanomaterials for the removal of pollutants and evaluating their efficiency in constricted wetlands. So I selected the topic because we have lots of agricultural waste, and in what way we can use it in for like in industry or to safeguard our environment. So next slide. Okay, so this is the nature is in balance, and eutrophication is one of the biggest problem in India and in other countries. And in US, more than 42% of the lakes are eutrophic. In India, there is no data on eutrophication, like how much percentage of lakes are eutrophic, and more than 66% of the river streams are eutrophic. So you can see in this, you can see in this video, you can see the color of the lake. And due to eutrophication, there are some like symbols you can see it. You cannot swim here. You cannot use it for aesthetic use. So these are the problems, and this is because of the high concentration of nitrate and phosphate in the water bodies. Next. And there is a natural phosphorus cycle in the nature. So there are finite sources for the rock phosphate, DAP. It comes from we have only one source, DAP, one source, rock phosphate, and it is limited in nature. So after mining, it comes to the agricultural field, and after agriculture, it goes to our food, and after that, it goes to the water bodies, which pollute the water bodies, and it is creating eutrophication. It is having high concentration of phosphate and nitrate. You can imagine we are using that nitrate, nitrogen and phosphorus in agriculture. These both are the fertilizers. That's why I selected that topic. Next. So phosphate fertilizers are limited on the earth. These are non-renewable sources in nature, and 2/3 of the phosphate fertilizer comes from the only rock phosphate. These are finite, non-renewable, and the stat says that it peaks in the 2030s, and US import 20% of the phosphate fertilizer, and India imports more than 60% of the phosphate fertilizers. So where it questions the sustainability of the earth for the future generations. Next. So I told you plant uses phosphorus for their growth, and it peaks in 2033. After that, the availability is limited, so it will lower down. Next. So what can we grab the opportunity? There are two sides of the coin. One is the shortage of the phosphate fertilizers and import and dependency on the other countries. Another side, we have eutrophic lakes, which has excess phosphate in it. So there must be some balance between the two. Can we grab the opportunity? So we have to select the nature-based solution, nanotechnology, why I selected the nanotechnology, I'll tell you in the next slide, and circular economy. Next. So there are some of the technologies available for the extraction of the phosphate from the water bodies. There are physical, chemical, and biological. So I selected the adsorption. Why? These are the fast process, low operation cost as compared to the others. Next. So we have to look for the alternative phosphate removal technologies which will be sustainable, and the goal of this study is to reuse the agricultural waste in the circular economy. And why I selected a nanocellulose? So what is nano size? Nano size is the less than 100 nanometers nano size, always. Not even 101 nanometer is not nanotechnology. It is not
always you have to select less than 100 nanometer. So these are having huge surface area as compared to their volume, and the market for the nanocellulose is estimated to be 5.7 billion by 2032, and the present market is 1.8 billion. So these are the plant-based resources. So the plant waste, it is consisted of the three things. One is cellulose, hemicellulose, and lignin. Only cellulose part is crystalline in nature. Crystalline in nature means it is stable, and the hemicellulose and lignin both are amorphous in nature. So they are having their different uses. We can use it like lignin, it works as a cementing material, but here we are only concentrating only on the cellulose because it is crystalline in nature and it is stable. So we can change it in other ways. We can use it in for other industrial use or any other use. Next. And I selected only the barley crop because reasons for selection: less crop market, and we can add value addition to the farmers for more economy. And barley is the globally fourth, US is fourth number in the barley production, and US is the 15th production in 2021, and North Dakota, where I stayed, North Dakota is third in US. Next. So these are the barley grain production. I use the FAO states for the estimation. So this is the data. Next one. So this is the reason wise the global availability of the barley residue globally. You can see here Asia is having the 12.6% of the total global availability of the barley straw. So we have huge amount of agriculture waste. I here worked on the barley straw, but we can use like wheat straw, rice straw, and other like maize cob. So I calculated the possible cellulose production using that barley straw globally. So here you can see we have like in 2022 we can probably produce 53.43 into 10^6 megagram of cellulose. Next. So this is the nanocellulose for fiber extraction. What we selected, and we filed a patent for that process. So we use the barley straw, which is the agricultural waste. It is not the grain, it is only the agricultural waste. After grinding it is in the powder form. We use alkali treatment for removal of that cementing material. You can see the color, and after that bleach, again the hemicellulose is removed. Here the lignin is removed, and a bit of hemicellulose, and here the hemicellulose is removed, and you can see the color of the pure cellulose, and this is in the dried form. And we did like characterization for FTIR, SAM-TEM. These are different characterization slides. So these are some just skip it. I'm not going to show the chemistry of it. In the alkali treatment, all the lignin and hemicellulose is removed. Next, in the bleaching process, lignin and hemicellulose both are removed. Next one. Next. In the acid hydrolysis, after removal of all the lignin and hemicellulose, the pure cellulose is formed. Next. So we did FTIR. FTIR tells about the functional groups present in it. So you can see here all the four raw straw, alkali treated, bleached one, and acid hydrolysis. You can see in the change of the functional group. And okay, in X-ray diffraction, this is the crystallinity index. You can see the increase in the crystallinity after every stage because it is purified at every stage. So it confirms the hypothesis. Next one. So this is TGA. It tells about what is its thermal characteristics. You can see here the cellulose one. It is more stable at higher temperatures. Next one. So this is XPS. It tells out what is happening in the chemical elements present in it. So you can see here. Just go back. So at the raw stage, the carbon is more and oxygen is less. So at every stage, like oxygen to carbon ratio is increasing. So next one. So you can see these are the electron microscopes data. You can see here the vesicles present in raw barley straw,
and these are the fibers swollen at the alkali stage. Next one. And at the bleach stage, you can see here the clear cut picture of the bleaching, and after acid hydrolysis you can see this is the picture of purified cellulose what I used in the for the stage. Next one. So we also did the TEM, transmission electron microscope, to show it is in the nanoscale. So you can see it is having size of 30 to 80 nanometer. Next. So these are the correlation between the different parameters. Next one. So this is the basic concept of that one. So we use that cellulose, using that Bareilly straw, we produce cellulose. After that we activated it because cellulose activate, and after that we functionalize it. I am telling you. So phosphate, that is PO4, 3 minus, it is having negative zeta potential in it, and cellulose is also having negative zeta potential. So negative and negative both will repel, definitely repel. That's why we activated it in tube furnace to give the more surface area so that the iron can bond. So we functionalized it with the iron. Now it is having iron plus 3. So iron is plus and phosphate is negative. So definitely it is going to bind. So and we used it for the removal of phosphate from the eutrophic lakes. So now this material is having iron and phosphate in it. Now we can use that material in the agriculture. I used it in spinach. So it will like provide phosphorus as well as iron. So iron fortification and phosphorus. So both problems will be solved and it will cater the plant growth. Next. So this is the schematic diagram of the cellulose production. Next one. Next. Okay, so this is the mechanism of thermal activation. After 500 temperature, the carbonization occurs. So it is having after 500. If you go beyond the 500 temperature, the percentage of the purity of like carbon present in the any biomass, it will increase. So that's why I use two temperatures in it, 300 and 500. Next one. So these are the batch studies with the activated cellulose. So I use that activated cellulose, but you can see when I use 50 gram per liter, it removes only the 20% of the phosphate in it. Next one. And so this is the like mechanism of the iron functionalization. So it binds with the like multiple sites on the activated cellulose, the iron binds. Next one. And because 15 gram per liter, it is removing only 20% of the phosphate from the water. So that's why I functionalize it, and I use different molarity of the iron, 0.25, 0.5, 0.1, 0.15, 0.2. But the 0.15 it is performing better. So the next one. So you can see the 100% removal of the phosphate using 0.15 iron functionalized cellulose. Next one. So, but you have to decide the time. Time is the most important factor deciding any adsorbent. So you can see here after like 15 minutes the concentration is less than 1. And if you see here, so go to the next one. So after 30 minutes it removes 100% of the phosphates, and when I put it all the data in different like kinetics model, it follows the pseudo second order, which means the process is chemoabsorption, which means it is chemical reaction. It is not kind of physioabsorption, which is like a reversible. Next one. So point of zero charge, it is one of the most important parameter to decide any kind of adsorbent. You can see here the point of zero charge is 5.8. Below that 5.8, the charge on that material is positive, and after that negative. Next one. So that's why I selected different kinds of pH to remove whether it is working for different pH or it is working only below 5.8. But it is working for all the pH. You can see here at pH 12 in alkaline range, the removal is more than 96%. So
it is binding with the multiple sites, so compleximmetric process is like prevalent here. So the water is a mixture of different ions. It is not mixture of only nitrate and phosphate. So I use different kinds of ions like sulfate, nitrate, fluoride. So you can see here in the presence of different ions, the removal is always more than 95%. So the other interfering ions, they are not interfering with the removal of phosphate. And these are some other ions, humic acid, chloride. You can see always the removal is more than 95%. Only in the case of natural organic matter, it is like below 95%, but it is more than 90%. So it is not affecting the removal process. Next one. So isotherm studies. So I put it all the data in different kinds of model, Fredlich, Langmuir, and Temkin. So you can see here the best fitted, it is showing 9.8 for Langmuir and for Fredlich 9.7. So Langmuir, it is showing it is a like monolayer adsorption, and Fredlich it is showing multi-layer. So the adsorption is at multi-layer, not at a single layer. Next one. So I compared all the other literatures present. So this material, it is like having maximum adsorption capacity of 55.8, which is really good. Next one. So we also did some thermodynamic studies, because temperature is one of the most important factor for different climates. So that's why thermodynamic study is very important. So we fitted like 25 degrees centigrade, 30 and 45. So it is showing the Gibbs free energy minus 14. So which is showing the thermodynamic feasibility and spontaneity. So the process is spontaneous. And enthalpy, it is showing the internal energy. So it is endothermic reaction. And entropy, it is 0.06. So it is a spontaneous process and it increased randomness. So it all shows the feasibility of the reaction. Next one. So this is the mechanism of the removal. There are four kind of mechanisms are electrostatic precipitation, ligand exchange of the phosphate and the iron at the surface. You can see the red one is iron and this is the phosphate. Surface precipitation and surface complexation. Next one. So this is the SEM EDS data. So you can see here with and without adsorption. You can see the phosphorus is not present before adsorption, but after that phosphorus is present and the mass is 4%. So it is proving that the phosphorus removal is happening just because of that SEM EDX data. Next one. And desorption study. After how much cycle we can use it. So we use different kinds of molarity of NaS solution. So it works up to 6 cycle. Like so, you'll find 50% of the removal. Next one. So it is a complete package of nano-based circularity, because we are using agricultural waste, we are producing nanocellulose, and we are removing phosphorus from the water body, and we are using it in the agriculture, because it is a source of phosphorus and iron. So we can make some kind of pellets, we can put it in the bags and we can sell in the market. So it is providing both phosphorus fertilizer as well as safeguarding the aquatic ecosystem by like reducing the risk of eutrophication. Next one. So the next part, we use that material in the lab. So this is one kind of greenhouse we constructed, custom made. So you can see this is the plant available phosphorus pool, and plant is uptaking the phosphorus, and whatever is going lost, that is going to run off and leaching. That's why we use that material for the next one. So these are the different treatments. So we used that light and we put here, you can, the students can like see what is the like a design of that experiment. These are the glass of 18 centimeter. You can say these are the hydroponic solution which is having that material in it, and this is the plant, and this is the soy foam
desk foam so that it will float. And these are light, and you have to provide airflow, a bubble, so that the continuous mixing of that material. Next one. And so this is the like lab picture. So this is the like plant growth. So T9, we are giving that material to the hydroponic solution, which is showing like highest growth in the biomass and length. Next one. So again, you can see here the highest growth in the like last treatment as compared to Hogland solution. Next one. So the leaf chlorophyll, it is also highest in that treatment where we are providing that iron-based cellulose. Next one. So these are the iron uptake in the aerial part. You can see here the iron uptake is maximum in that treatment. Next one. So these are the two, and the next one we use the same phosphorus base in the arsenic one, because arsenic is one of the problem. So we use that barley straw nanocellulose, and we functionalize it with the iron, and after that we used in the arsenic removal from the water bodies. Next one. So arsenic is a metalloid. It is really dangerous, and if you like, you know about the arsenic cases. Next one. So these are the arsenic affected countries in the world. You can see India, like, you know, the arsenic problem in the like Bengal, in especially in the like West Bengal and Bangladesh. So this is the like over 200 million people, more than 50 countries are affected by arsenic. So this is the data of the WHO 2017. Next one. So this is the scenario of the US. US is also having like big problem of arsenic, and the limit is 10 microgram per liter. And these are the like dose optimization. So we selected 1000 ppb of the arsenic plus 2. It is present the plus 2 and plus 5. Plus 3 is more hazardous than plus 5. So these are the like dose optimization, but in the both 0.2 molar is showing the best results. It is showing the 100% of the removal. Next one. So the tank, we also fitted that data into kinetics. Next one. Next, it is showing like a removal. You can see here after like 30 minutes, it is showing nearly 90% of the removal. And after when you increase the time, you can see like after 2 hours, it is showing complete 100% of the removal. Next one. So again, we fitted all the data into kinetic models. So it is following the pseudo second order reaction. What does it mean? It means again it is chemoabsorption, not it is not a kind of physioabsorption. So the process is chemical combination of arsenic and iron. Next one. So this is the mechanism. Here it is the one important thing, like plus 3, it is like oxidizing to the plus 5. And the next one is go back. Surface complexation, surface precipitation, electrostatic attraction. So iron is attracting all the arsenic present, plus 3 and plus 5 present in the water bodies, in lakes or rivers. Next one. So this is the last part of the study, constructed wetland for the grey water treatment. So what are the constructed wetlands? As you know, forests are the lungs of the earth, and wetlands are the kidney of the earth, because it is filtering all the pollution from the water bodies, and it is providing all the like support to the biodiversity. So the wetlands are really important. Natural wetlands are really important for our nature and earth. And so that on the basis of that, we selected the constructed wetlands. So constructed wetlands we can design, we can provide any kind of thing, because it is constructed, it is in our hand. Whatever we have to decide, we can decide, and we can put the material and all the like pollutant plants. We have like freedom to select the plants. So that's why we selected the constructed wetland. So these are the constructed wetland. So the next one, these are the so
natural wetland versus constructed wetlands. So I told you like natural wetlands are the earth, kidney, these are the pollution filter or pollution barrier, we can say storm barrier, buffer, and constructed wetlands are there are three types of constructed wetland: subsurface flow, surface flow, and the hybrid system. And these are the engineered system because we designed it. So this is the engineered. These are the again pollution filter, and is to contain low energy input as compared to the other physical, chemical, and biological treatment processes. Next one. These are the different characteristics of the wastewater what we selected for the study. Next one. And these are the quantity and items we selected for design of the constructed wetland. Next. So we selected the PVC tub for that. So there are mainly three reactors. One is having only with the gravel, the next one with the plants, and the third one with the plants. And the filter we designed, this is the filter we designed to remove, okay, to treat the grey water. Next one, I'll show you so this is the design of the constructed wetland. So I have like less time, I took like lots of time, it's okay. So next one. So this is the filter what we designed. You can see here the design. We put the material inside, and this is the nylon cloth because the cotton will absorb some of the pollutants. So that's why we didn't use cotton. Next one. So this is the actual experiment in the lab. So this is like without plants, the control one. This is with the plant, this is with the plant, and this is with the filter. You can see here, this is the filter. And this is the source of the grey water. We selected an NS350, which is the like a standard for production of the grey water in the lab. Next one. So this is the NS350 recipe for the grey. Next one. So this you can see the characteristics of the grey water. It is having a really high BOD and phosphate 1.42, and you can see the BOD of 45 and 326. Next one. So we selected like 2 days HRT and 1 day HRT, hydraulic retention time. So next one. So as compared to 2 days HRT and 1 day HRT, 2 day HRT is performing well with the filter. Next one. So this is the BOD and COD removal. So BOD and COD removal is more in the constructed wetland with the filter. Next one. So this is the calculated K values compared to the customized K values. So all the things fall within the range. So this is the XPS, what it is showing before and after. You can see here, before is like carbon is more and after that less. So, and you can see here it is not detected, and after that like 6.44 in that material. So the material is absorbing and cleaning that grey water. Next one. So in conclusion, I'll say like it is a complete package of circular economy because we used agricultural waste to treat the wastewater and to solve the problem of the environmental challenges in the present scenario. But it is fulfilling the objective of this conference. So it is a way forward towards the green and circular economy. Thank you. So next, I want to thank my collaborators, the funding agencies. Next one, I want to thank my research group. Thank you all. चाहिए लगा रखा। Thank you, sir, for your valuable address on soil resource management, cellulose production from agriculture waste, nanotechnology,
You told about the arsenic removal from water bodies to combat the water pollution. Thank you very much, sir. A step ahead, it's the time to hear Dr. Puneet Khare, sir, scientist, IITR Lucknow, Senior Technical Officer, CSIR, IITR. His area of specialization is flow cytometry and in vitro cell culture. Dr. Puneet, sir. A very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Puneet Khare. So, in brief, I want to explain my topic, toxicological endpoint for toxicity of assessment of environmental toxicant microplastic. So before starting my lecture, I want to say Happy World's Environmental Day to all of you. And today's theme is beat the plastic pollution, which is suggested by WHO. So firstly, I want to say about some टॉक्सिकोलॉजी. व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी? एक्चुअली कई लोग को नहीं पता होगा कि टॉक्सिकोलॉजी क्या है. जो न्यूअर हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स और टॉक्सिकेंट. तो ब्रीफली मैं बताना चाहता हूं कि जो टॉक्सिकेंट या पॉल्यूटेंट आपको इन्वायरमेंट में को प्रॉब्लम कर रहे हैं, दैट इज द इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट. बट इन केस दीज पॉल्यूटेंट आर आल्सो interfering our biological system, so we call them the toxicant. ये एक इनका ब्रीफ है, आपके समझने के लिए डिफिनीशन है, अदरवाइज इट इज ए वास्ट फील्ड. सेकेंडली, यहाँ पे हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में 3-4 चीजों पे फोकस करते हैं. दैट इज द डोज. डोज पे फोकस क्यों हो रहा है, आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि शुगर एक बच्चे के लिए यूजफुल और सोर्स ऑफ एन ग्लूकोज, बट एक ओल्ड पर्सन इट इज नॉट यूजफुल. तो इसको टॉक्सिकोलॉजी का जो डिफिनीशन ही दी गई है कि एनीथिंग मे बी टॉक्सिक, कोई भी चीज हो सकती है टॉक्सिक. इट इज ए डोज विच डिफाइंस इट टॉक्सिक और नॉट टॉक्सिक. तो एक लेवल तक वाटर भी बेटर है, बट मोर देन दैट इज द टॉक्सिक फॉर अदर वन. सो सिमिलरली वी रूट ऑफ एक्सपोजर. सेकेंडली, रूट ऑफ एक्सपोजर पे फोकस किया जाता है. रूट ऑफ एक्सपोजर सपोज करिए, मान लीजिए आपका कुछ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट है जो आपको किसके थ्रू, इनहेल के थ्रू आ रहा है. तो दैट इज द रूट ऑफ एक्सपोजर इज द इनहेलेशन. कुछ आप इंजेस्ट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, दैट इज द आप इंजेक्शन. एक बैक करिएगा. सिमिलरली, एयर, सेक्स एंड इन्वायरमेंट, द ऑर्गेनिज्म वेयर इट इज लिविंग, it is also crucial for toxicant or toxicological studies. For example, कोई आपका hilly regions में है, so they are much more healthier compared to our lungs. तो और जितना भी हम लोग, मान लीजिए आप दिल्ली साइड में जाएंगे तो आपका और ज्यादा AQI वैल्यू आप आजकल बहुत न्यूज में पढ़ते होंगे, तो वो जानकारी आपको मिलेगी. सेकेंडली, चूंकि हम लोग का थीम है माइक्रोप्लास्टिक, दिस ईयर प्लास्टिक्स पे पॉल्यूशन पे ही वर्क करने के लिए ज्यादा एम्फेसाइज किया गया, दैट इज द माइक्रोप्लास्टिक. तो आप थोड़ा सा पैक करिएगा.
तो ऑफ द मेनी पॉल्यूटेंट माइक्रोप्लास्टिक इज आल्सो ए वन टाइप ऑफ प्लास्टिक। क्या होता है, ये डिग्रेड करता है प्लास्टिक, जो आपका जैसे प्लास्टिक बॉटल है, डिग्रेड करके 1 माइक्रोन से 5 मिलीमीटर तक जो जा रहे हैं, दैट इज द माइक्रोप्लास्टिक के अंदर होंगे, और उससे बाद जो डिग्रेड होगा फर्दर, दैट इज द नैनो प्लास्टिक्स। सो these are irregular shaped, maybe regular, and they are insoluble in water. So these are the definition of microplastic. I think everyone aware with this microplastic. These are the basically the particulate matters. आगे बढ़िएगा. Yes, next. So 2.7 million tons of microplastic has been dumped in 2020. Now it is supposed that in year 2040 it will become the double of that. And finally आपने देखा होगा कि most affected areas है aquatic systems and आपके atmospheric system. So you can see that the aquatic animals are also the sources from where we get the microplastic in our body. And in lungs you can see that by means of air pollution, जैसे कि आप चल रहे हैं बहुत ही ट्रैफिक में, तो you have more chance of getting much microplastic inside your lungs due to the wear and tear of tires. आपने देखा होगा टायर्स को कभी कोई ध्यान नहीं देता, but these are also the source of microplastics or micro things which are present in the atmosphere. Next. So there are two sources which are categorized for microplastic, that is the primary source and secondary source. तो primary source तो इस तरह है कि intensely डाला जा रहा है, intensely use किया जा रहा है microplastics में. तो once major cause is the cosmetics. So ladies department is much responsible for this one. So because many type of scrubs and cleaner like that cosmetics using these microplastic beads, that is the micro beads. आपने देखा होगा क्लीजनिंग मिल किया वैसे उसमें रब स्क्रब करने के लिए, तो that is the micro beads. It is the primary. Why it is called the primary? Because we are intensely adding. We knowing that these are the harmful, but we are adding them. So this is the, and secondly आजकल आपने देखा होगा जेल में, टूथपेस्ट जेल है तो थोड़ा सा आपके टीथ को और अच्छा सा क्लीन करने के लिए, व्हाइटनिंग करने के लिए they are adding the these are the microbeads. Another form of the plastic glitter, plastic pellet और microfibers. Microfiber means कि आप लोग देखेंगे शर्ट वगैरह में आजकल माइक्रोफाइबर से कूलिंग करके बनाना, वो टाइप की चीजें आ रही हैं, दैट इज द आल्सो द इंक्रीजिंग दैट वन. एंड सेकेंडरी द माइक्रोप्लास्टिक. These secondary microplastics are due to the degradation of the plastics into smaller form by weathering in due to the action of sun or air, water, like that. Next. So आप देख सकते हैं कि इन ओशन एक स्टडी के अकॉर्डिंग 35% जो हम लोग को टेक्सटाइल से ओशन में जाता है माइक्रोप्लास्टिक, एंड 28% कार टायर से, सिटी डस्ट 24, एंड फाइनली रोड मार्किंग, लाइक दैट देयर आर मेनी सोर्सेस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक्स. नेक्स्ट. ओके ठीक है. सो these are the routes by which we get the microplastic inside our body: ingestion, inhalation, dermal exposure. Dermal exposure means आपके स्किन से जो जा रहा है, inhalation आपको पहले पता है. नेक्स्ट कर लीजिए. So many type of problems get created due to these microplastics, like that neuronal problem. बिकॉज ये माइक्रोप्लास्टिक इतना स्मॉल है कि हमारे ब्लड में भी, आज अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे फॉर माइक्रोप्लास्टिक, मे बी यू गेट द माइक्रोप्लास्टिक इन योर ब्लड,
and it is so small and tiny that it can cross your blood brain barrier. Actually क्या है, नेचर ने बना रखा है हम लोगों का ब्रेन और बॉडी के अदर पार्ट से ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है जो हमारे ब्रेन को आइसोलेट करता है, बचा के रखता है, मगर ये इतना माइन्यूट है कि इट विल गो इनसाइड द ब्रेन एंड क्रिएट मेनी प्रॉब्लम्स. सो लास्ट स्लाइड एकदम दिखा दीजिए, फिर बाद में सर को जाना है. सो आई विल कंक्लूड द लेक्चर आफ्टर लंच. ओके, लास्ट एकदम स्लाइड. बस. So there are possible solutions. Reduce the use of plastics. It is very common. देखिए आप कि plastic bottles are much मतलब commonly available, cosmopolitan in everywhere. So you have to reduce them by taking water from your home or taking stainless steel or copper bottles. Secondly, improve wastewater treatment. You have to use the filter. You have to use the filter so that the before drainage properly filter the microplastic, and then develop new technologies. Certain new technologies should be based on the filtration of so minute so that it can isolate the microplastic or nanoplastic. And finally, rising public awareness, which we are doing in this day. And our sir is also doing that one. So thank you very much. Okay. Thank you, sir, for your knowledgeable conversation. We will hear sir in brief after lunch. कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते. बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते. With these words, I welcome Shri Ramesh Sharma sir, ADG Bareilly Zone. He holds a BTech degree in electrical engineering, and over his distinguished career, he has several key positions in the Police Commissioner Prayagraj, known for embracing technology in policing. He introduced the AI-based digital PRO. Sir, please come and say a few words to motivate. Thank you, Dr. Krishna. आज के सेमिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर AP सिंह साहब, डेस्क पे उपस्थित सभी आमंत्रित अतिथिगण, लर्नड प्रोफेसर्स, खरे जी, गुप्ता जी, ऑल दी इनवाइटेड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स. मैं बहुत सारे लोगों को बाय नेम जानता हूं, तो मेरा एड्रेस बहुत लंबा होता चला जाएगा अगर मैं सिर्फ संबोधन पे रहूं. तो ऑल दी पीपल जो आज इस एनवायरमेंटल इश्यूज और चैलेंजेस 21st सेंचुरी के, इनके ऊपर जो ये इंटरनेशनल सेमिनार हो रहा है, उसके अंदर सभी एकेडमिशिया से इनवाइटेड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, स्टूडेंट्स, अदर फैकल्टीज से इनवाइटेड गेस्ट और प्रेस के बंधुओं, मैं सबसे पहले थैंक यू कह के प्रोफेसर साहब को, AP सिंह साहब को थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 के अवसर पे मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे यहाँ बुलाया. एंड एट द वेरी ऑनसेट, बिगिन करने से पहले ही मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस सेमिनार में, इस हॉल के अंदर मौजूद, आई एम द लीस्ट क्वालिफाइड पर्सन टू बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ यू एंड टू बी सेइंग एनीथिंग. बट किसी भी सेमिनार को या किसी भी चीज़ को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. एकेडमिशिया को प्रैक्टिस में लाना मेरे ख्याल से सेमिनार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है. व्हेन वी आर इन एकेडमिक्स, व्हेन वी आर डूइंग रिसर्च, वी गेट सो कैरिड अवे बाय व्हाट वी हैव फाउंड और व्हाट आर आवर फाइंडिंग्स दैट एट टाइम्स वी डोंट रियलाइज कि हम इसके बारे में कॉमन मैन को कैसे प्रैक्टिस में लाने के लिए कहेंगे और इसको हम कैसे कॉमन मैन तक ले जाएंगे.
So what I have been realizing after graduating from IIT Kanpur and being in a public service is कि हम सब के अपने अपने fads हो जाते हैं. We all start with our fascinations and then we want the world to understand it from our point of view. At the very onset, environmental seminar, World Environment Day 2025 के अवसर पे जो है, मैं सबसे पहले बिगिन करना चाहूँगा. सोशियोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज़ which was called विस्कॉन्सिन एक्सपेरिमेंट. विस्कॉन्सिन एक्सपेरिमेंट को बहुत शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, अफॉरेस्टेशन के लिए लोग बाग प्लान कर रहे थे विस्कॉन्सिन में, and they planted trees again and again, and every year they used to do afforestation, and afforestation fail हो जा रहा था. So later on they realized कि वो चूज खुद कर रहे थे कि कौन सा पेड़ लगाना है, क्या करना है, and that is the reason it was failing. उन लोगों ने फिर फीडबैक लिया, लोकल पॉपुलेशन को इन्वॉल्व किया. दे वांटेड टू नो कि लोकल पॉपुलेशन कौन सा पेड़ लगाना चाह रही है, एंड पोस्ट दैट दे सक्सीडेड इन डूइंग अ मेजर अफॉरेस्टेशन इन विस्कॉन्सिन. ये काफ़ी साल पुराना एक्सपेरिमेंट है, एंड दिस इज बाय द नेम ऑफ विस्कॉन्सिन एक्सपेरिमेंट. सो प्रोबेबली व्हेन हम एनवायरमेंटल इश्यूज और चैलेंजेस पे सेमिनार करते हैं, तो जो मैं लेमैन की तरह से चीज़ें बोल सकता हूँ या कह सकता हूँ, वो ये है कि हमें बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ इन सेमिनार्स में जाना चाहिए. एंड अगर हम एनवायरमेंटल चीज़ों पे सोचें तो बहुत ज़्यादा मल्टी डिसिप्लिनरी वेज ऑफ थिंकिंग हमारे हो सकते हैं. वी कैन थिंक अबाउट इट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव कि हम इसको टेक्नोलॉजी के एंगल से कैसे ले सकते हैं, हम एग्रीकल्चर के एंगल से चल सकते हैं. वी कैन अप्रोच इट थ्रू द लॉ पर्सपेक्टिव कि हमारे को किन लॉज की आवश्यकता है जिससे हम एनफोर्समेंट और स्ट्रॉन्ग कर सकें. वी कैन लुक एट इट फ्रॉम सो मेनी डिसिप्लिन्स and also from the discipline of metaphysical approach towards this. बहुत शॉर्ट में इसकी इम्पोर्टेंस अगर मैं बैठ के सोचूं या कहूं तो इस बात से है कि एक सेटी प्रोजेक्ट है, आप लोगों को मालूम होगा, सर्च फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ. अभी तक कई सालों से इस प्रोजेक्ट में कई $1 मिलियन स्पेंड करने के बाद भी वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड अ लाइफ फॉर्म. हम किसी पूरी गैलेक्सी में लाइफ फॉर्म नहीं ढूंढ पाए हैं. वेदर बाय गॉड्स डिज़ायर और बाय जस्ट अ चांस. हम एथीस्ट हैं तो हम चांस कह सकते हैं. इफ़ यू बिलीव इन गॉड तो गॉड्स की डिज़ायर कह सकते हैं. बट लाइफ कहीं और एग्जिस्ट नहीं करती, लाइफ सिर्फ अर्थ पे है. तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अकेली एक स्पीसीज़ इस तरह के करके जो उसके लालच पे बेस्ड हैं और जो उसकी इकोनॉमिकल नीड्स पे बेस्ड हैं, उनके थ्रू हम लाइफ को ख़त्म कर देने की हद तक ना चले जाएं. बिकॉज इट्स अ डेलिकेट बैलेंस एंड वी डोंट नो कि हमारी जो ग्रीड है वो कब लाइफ को बिल्कुल ख़त्म कर देगी. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हाईलाइट करता है आज के सेमिनार की इम्पोर्टेंस को. और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में इकोनॉमिक्स अगेन और ग्रीड आई थिंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो शायद एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचा रहा है या एनवायरनमेंट को डेंजरस वे में बना रहा है. इस बार की जो थीम है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की, वो प्लास्टिक पोल्यूशन के लिए है कि वी वांट टू पुट एन एंड टू प्लास्टिक पोल्यूशन. और इसी के साथ ही साथ आज आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के द्वारा ये एक पहल की गई है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम. तो अफॉरेस्टेशन को इमोशनल एंगल से जोड़ते हुए वी आर ट्राइंग टू अचीव कि हम अगर माँ के नाम पे एक पेड़ लगाएंगे तो उसकी सर्वाइवेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ेगी. तो टुडे इज़ अ वेरी गुड डे टू स्टार्ट कि हम अफॉरेस्टेशन माँ के नाम से स्टार्ट करें. तो उसकी एक इमोशनल अपील भी हमारी बनी रहेगी, एक भावनात्मक लगाव रहेगा जिसके साथ सस्टेनेबिलिटी उन पेड़ों की बढ़ेगी. चैलेंजेस मल्टीपल हैं हमारे सामने जो पोल्यूशन को लेके हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके हैं. हमारा जो वेस्ट प्रोडक्शन है डिफरेंट फॉर्म्स का, द पोल्यूशन दैट वी हैव, अर्बन पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग जो डैमेज पहुंचा रहे हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स को जो हम एक्सपोज कर रहे हैं,
और अगर लोकल जगहों पे आएँ तो बरेली जोन को मैं स्पेशली ये बात कह सकता हूँ कि ई कचरे का जो खतरा है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। जो पीसीबी प्लेट्स हैं वो जगह-जगह बनाई जाती हैं और यहाँ लाके जलाई जाती हैं, व्हिच रिजल्ट्स इन अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन दिस प्लेस, स्पेशली इन मुरादाबाद एंड बरेली में भी इसका इम्पैक्ट काफ़ी है। हम लोगों को प्रोबेबली विद ऑल दी एकेडमिशिया एंड डिफरेंट फील्ड्स बीइंग है, हमें टेक्नोलॉजी में शायद इन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज करना है कि व्हाट डू वी डू जिससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक नई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दें। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी जस्ट नॉट नीड टू गो फॉर द टेक्नोलॉजी जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। तो हम क्या ऐसा करें जिससे हम चीज़ों को रीयूजेबल, रिसाइकलेबल बनाएं और उनको हम इस तरह से करें कि वो दोबारा यूज़ हो सकें और सस्टेनेबल रहें। अगर सब चीज़ों को बहुत लेमैन की तरह और बहुत बिल्कुल बेसिक्स पे आके मैं कहूँ तो शायद हमारा टॉलरेंस लेवल बढ़ाने की आवश्यकता है। हमें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी सोचना चाहिए कि जस्ट बिकॉज वी वांट थिंग्स बेटर फॉर आवरसेल्व्स, हमारा मैं का जो सर्कल है वो बहुत छोटा है। मेरे घर में एक अच्छा सोफ़ा हो इसके लिए मैं एक पेड़ काट दे रहा हूँ, मेरे घर में अच्छा फर्नीचर हो इसलिए मैं और डैमेज कर रहा हूँ, मेरे रिसर्च पेपर, मेरे सेमिनार्स में अच्छी क्वालिटी का पेपर इस्तेमाल होगा, सो दैट इज़ रिजल्टिंग इनटू मोर थिंग्स। एवरीथिंग मैं अपने लिए ये अच्छा चाहता हूँ, मैं अपने लिए अच्छा चाहता हूँ। अगर इसी सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर लें कि मैं में मेरे पड़ोसी भी आ जाएं, मेरे परिवार के लोग आ जाएं, मेरी कम्युनिटी के लोग आ जाएं, मेरी कंट्री वसुधैव कुटुंबकम का फीलिंग आ जाए, तो प्रोबेबली इसको हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से टैकल कर सकते हैं कि पोल्यूशन की प्रॉब्लम तब समाप्त हो जाएगी। और 25 इयर्स ऑफ माय सर्विस अब जाके मैं रियलाइज़ करने लगा हूँ कि शायद जो बुज़ुर्ग लोग बात बताते थे वही लाइफ का क्रक्स था। आई एम कमिंग बैक टू दी ओल्ड थिंग्स कि क्या जो चीज़ें बहुत पहले लोगों ने बताई और बहुत सिंपल तरीके से बताई, दैट इज़ द होल डैम क्रक्स। आप साइंस या जो टेक्नोलॉजी है उसका एक बहुत बड़ा पैशन होता है टू मेजर एवरीथिंग, मैट्रिक्स में जाके मेजर करना, उसको मैथमेटिक्स में ले जाके फिर उसको इवॉल्व करना एंड टू कम बैक एंड से समथिंग। तो साइंस में और टेक्नोलॉजी में एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम नाप नहीं सकते, जिसको हम माप नहीं सकते और जिसके ऊपर हम कोई मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हम यूजलेस समझते हैं। एंड इस पैशन में वी फॉरगेट कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ कैन नॉट बी मेजर्ड। आपके अपनों का प्यार अभी तक कोई हम मैट्रिक्स डिवाइस नहीं कर चुके हैं, पाए हैं कि हम उसको नाप सकें। वी हैव नॉट बीन एबल टू डिस्कवर एनी मैथमेटिक्स जिसमें हम लोगों का प्यार, सस्टेनेबिलिटी, वाई थिंग्स आर हैपनिंग, वाई इज लाइफ एग्जिस्टिंग, इसको हम किसी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं कर पाए हैं, इसको हम किसी मैथमेटिक्स में रिड्यूस नहीं कर पाए हैं। तो जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसका पैशन टू मेजर एंड टू अप्लाई मैथमेटिक्स is actually just a very small microscopic dot in the whole scheme of things in the galaxy. एक बहुत बड़ी scheme of things में एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और उस छोटे से हिस्से में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी अप्लाई कर करके सत्यानाश कर दिया है अपने एनवायरनमेंट का, और अपनी जो चीज़ें हमें फ्रीली अवेलेबल थी उनको हमने बर्बाद कर दिया। So with all the scientific community, academia that is present है, वो हमारे को जो चीज़ है वो शायद जो ह्यूमन एंगल है उसके ऊपर भी सोचने की ज़रूरत है, ह्यूमन वैल्यूज़ को भी सोचने की ज़रूरत है कि द ह्यूमन वैल्यूज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो लेट्स गो फॉर द मैट्रिक्स, लेट्स गो फॉर कैलकुलेशंस, बट टुगेदर विद इट नेवर फॉरगेट द ह्यूमन वैल्यूज़। Probably I think UGC also is now emphasizing about the human value thing। मैंने अभी कुछ दिन पहले UGC के ट्वीट में देखा था कि वो ह्यूमन वैल्यूज़ के एस्पेक्ट को भी UGC एम्फसाइज कर रहा है। सो हम लोग को शायद उस चीज़ की बहुत आवश्यकता है, एंड ऑल्सो दो आज के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं हैं, बट मुझे लगता है कि हमें शायद ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा एम्फोसिस अब जो हमारी API स्कोर्स के लिए है कि वी नीड टू मेंटेन दी API स्कोर्स,
we need to generate research papers. We generate research papers which are more meaningful. We generate some researches which can actually be applied on the ground rather than just writing a paper just for the heck of it. कि हम सिर्फ एक पेपर लिख दें just for the heck of it. I am still seeing so many people, not from the academia. उधर का तो आप जान सकते हैं, I'm nobody to comment on it. But many retired officers who are going in for a PhD, and they are going in for a PhD with ChatGPT. So generative AI के through probably ये problem आप लोग भी face कर रहे होंगे, और मुझे लगता है कि environment का एक बहुत बड़ा दायरा है. It is not just the physical air, water, soil. It is much more than that. The environment also includes the emotional environment that we have, and it also includes the intellectual environment that we have. So intellectual environment के perspective से हम देखें तो नया pollutant generative AI आ गया है, जो Gen AI मुझे लगता है कि बहुत समय के अंदर आपकी सोचने की शक्ति भी खत्म कर देगा. In another 10 years from now, probably in such seminars, we would all be talking what Gen AI has generated for us. Gen AI स्टूडेंट्स के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है. सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन दो डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि ये हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को ख़त्म करेगा, इसलिए टू एंड आई एम जस्ट टचिंग ऑन इट कि जेन एआई के एंगल से भी एकेडमिशिया को बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर रहना पड़ेगा कि जनरेटिव एआई बहुत ही को इम्पैक्ट कर रहा है. इट लुक्स वेरी वंडरफुल व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग इट, बट बड़े खतरनाक रिजल्ट्स दे देता है वो. लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं ह्यूमरसली आई रिमेंबर एंड आई कोट इट. आई around 6 months back was researching something about fingerprinting. So fingerprinting पे रिसर्च करते समय बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करते करते मुझे लगा कि कुछ रेफरेंसेस, कुछ रिसर्च पेपर्स मुझे कुछ प्रॉपर मिल जाएं. आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रूव और रिसर्च कि फिंगरप्रिंटिंग हमारे इंडियंस के द्वारा निकाली गई, एंड प्रोबेबली फिंगरप्रिंटिंग जो है वो पामिस्ट्री से कहीं ना कहीं ओरिजिनली जनरेट हुई. So Britishers took the advantage of it, and then Britishers took it in their name because उनके पास academic journals थे which probably वो आज भी dominate करते हैं, यूरोपियंस और यूएस वाले. आप कोई पेपर लिखना चाहेंगे तो वो आपका पेपर तब तक पब्लिश नहीं होगा जब तक वो ऑथर आपका एक कोई यूरोपियन नहीं होगा. एंड वही चीज़ वो बाद में कह देंगे, they will just snatch away your intellectual thing, and then वो बड़ा holier than thou approach के साथ में something which you would have found 5 years earlier, 5 साल बाद उसको reproduce कर देंगे दूसरी तरीके से, and because they are having a hold on the journals, वो सारी चीज़ों को कर देंगे. He was just trying to research and find out things from a different perspective कि Indians ने ही 1890s 1900s के आसपास फिंगरप्रिंटिंग निकाली और उनका ही वो हुआ. So I was like just googling it. एक समय बाद मुझे लगा कि गूगल कर करके मैं अपनी आंखें क्यों फोड़ रहा हूँ. लेट मी जस्ट डू इट फ्रॉम द चैट जीपीटी, एंड शायद वो मुझे रेफरेंसेस बहुत अच्छे से जनरेट करके दे देगा. व्हेन आई डिड इट, उसने मुझे बड़े अच्छे कई रेफरेंसेस दिए जहाँ पे जाके मुझे ये लगा कि ये तो सब पहले ही हो चुका है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिस इज़ ऑलरेडी बीन डन. एंड सबसे मज़ेदार चीज़ उसमें ये हुई कि उसने मुझे एक बहुत बढ़िया एक नोट बना के इस पर भी दिया कि फिंगरप्रिंटिंग पे बहुत बड़ा काम मदन मोहन मालवीय जी ने किया. आई वेस्टेड अराउंड अ फ्यू डेज ऑफ माइन, अराउंड अ वीक, ट्राइंग टू फिगर आउट कि कभी मैंने पढ़ा ही नहीं कि मदन मोहन मालवीय जी ने फिंगरप्रिंटिंग पे भी कुछ किया था. फ्रीडम फाइटर की तरह तो पढ़ा है, ये पढ़ा ही नहीं है. आफ्टर वेस्टिंग गुड 7 days, आई फाउंड आउट कि ये सारा हेलुसिनेशन है जेन एआई का. इट इज़ हेलुसिनेटिंग एंड इट इज़ जस्ट गिविंग मी एनीथिंग. And whenever you tell it कि that you are lying और आप ये बिल्कुल hallucinate कर रहे हैं, that says I'm so sorry for it, and now I will give you the real references. Wasted 7 days for it. तो जो नए बच्चे या नए स्टूडेंट्स यहाँ पे हों उनको भी मैं बताऊँगा कि जेन एआई के पीछे ऐसा ना करिएगा कि आप ऐसी चीज़ जनरेट कर दें कि हम उसमें रहें. दो आई थिंक प्रोफेसर्स के एंगल पे ये है कि टर्निट इन में शायद अब जेन एआई की चीज़ें भी उन लोगों ने जोड़ ली हैं कि जेन एआई से अगर आप अपना पेपर लिख रहे हैं तो पकड़ लें. बट उसकी चूहे बिल्ली के खेल में देयर आर अगेन मॉडल्स विच कैन बीट टर्निट इन
मुझे बताना नहीं चाहिए, बट एक स्टेल्थ नाम का भी है जो पैराफ्रेजिंग करके बहुत अच्छे से दे देता है, जो टर्निटिन नहीं पकड़ेगा। तो इन दिस होल डैम गेम हम लोग एक और तरह के पोल्यूशन थ्रेट पे भी आ गए हैं, जहां हम लोग इंटेलेक्चुअली चैलेंज होने जा रहे हैं अगले कुछ समय में। तो एनवायरनमेंट में हमारे को बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके चलनी चाहिए। तो 1994 से प्रोफेसर साहब करा रहे हैं, सो आई वुड अज्यूम कि नेक्स्ट ईयर से आप इसमें इंटेलेक्चुअल पोल्यूशन का भी एक एंगल जोड़ते हुए आगे चलेंगे, सो दैट हम लोग इन आर प्रेशर टू generate more of academic papers, more of seminars, and the pressure of an API score, we ultimately do not land up polluting more of what is available already. So, हमारा multidisciplinary approach रहे। मैं इस 2 दिन के सेमिनार में I would congratulate all the organizing team जिसने यहाँ पे मेहनत पुट इन की है और जो स्टाफ पीछे से लगा है। I wish all the success for this seminar, and I wish this leads the way, this throws light to other people also to think about the environment from the survival point of view, that we are reaching limits जहाँ पे हम अपना ही survival endanger कर रहे हैं। So God bless all of you for the effort. God bless us all. Thank you. ये तो आज हमारी भी होके कुछ अरे नहीं सर, मैं कैसे खुश हूँ। Thank you, sir. Thank you for your blessings and motivational words. Exactly, sir. Very much agree with you. We have learned to fly in the air like birds and dive in the sea like fish. Only one thing remains to us, to learn to live on earth like humans. So it's the time to take a step ahead for the same, and we will try for the same. Now, learning is like a growing tree, giving knowledge to you and me. Each branch a story, and each leaf a thought, wisdom and lessons in every spot. The beauty of curiosity and how learning is a journey never ends are perfectly fit for our Dr. D.K. Upreti sir, President of this seminar. Please share your research experience with all of us, Dr. D.K. Upreti. Thank you, ma'am. प्रोफेसर साहब 2 मिनट में आप खाना कह रहे हैं, लंच लंच एक्चुअली 15 मिनट। It's really honor for me and pleasure for me that I'm a frequent visitor of this department, and I'm really happy and I appreciate the efforts which Dr. EICC has done for the last decade about the awareness of this environmental sciences to the common students, to the common person. If you see the theme of this year's environmental, the World Environmental Day is to beat plastic pollution. We human beings have contaminated not only sea, our earth, and even our sky. वो शायद मेयर So all type of बेटे का pollution कोई is कार्यक्रम there. हो रहा है, तो वहाँ से बुलाया जा रहा Even है। if you see in the last अभी भाग रहे हैं। 6 days, the carbon dioxide, बेटे कार्यक्रम एक नोटिस and this carbon dioxide ये नहीं मालूम। concentration was पार्थ नाम लिया ना उससे मैं समझा। पार्थ- यहाँ quite पार्थ low, पार्थ का but प्रोग्राम it था। increases and it reached few years back about 4,000 or nearing about 500 ppm. Similarly, what we are doing, we are reducing the precipitation, we are increasing the temperature. Within a decade, there is an increase by 0.2 degree temperature increase in 1 अभी तो decade. free So mind this है, वहाँ temperature is वहाँ तो increasing, precipitation is going down, and अब that's why एक्चुअली there हो is गया है ना कि सारा व्हाट्सएप पे तमाशा चल this रहा है। greatly affecting तब यहाँ से both the बैठे-बैठे अब transport and other elements. मैं भी भेजे जा रहा हूँ। Very shortly, I'm quite really happy to see Dr. Amitji's lecture, that he has mentioned everything over there. And even you have seen that Dr. Gupta was with us, he was talking about nanomaterials. Dr. Puneet was talking about the nanoparticles or nanomaterials.
And what I think nowadays, there is a need that means whatever plastic we produce, we can only recycle 9% of it. 91% is waste, lying waste. So what we should do, or how our researches, or the researches, they may be focused. They will focus on genes. Whether we should come out some genes which produce certain chemicals which can convert the plastics quickly, because in nature also the plastic is but it is very slow. But can act very quickly, efficiently. Secondly, Dr. Gupta has talked about the nanoparticles. You must be knowing that nanoparticles, their size is very less. It's 10 to the power minus 9. Can we use nanotechnology efficiently in control of the plastics or microplastics? You will be surprised to know that this microplastic, even it enters to the brain of fishes or our brains also, as Dr. Puneet has told you. Now, what we should do? What we should do? हम क्या करें? सबसे सस्ता काम या सबसे अच्छा काम, it is plantation of tree. Since I am from National Botanical Research Institute, I know the value of a plant. A single plant, if it is of bargat plant, it can reduce temperature by 20 degrees centigrade. 20 डिग्री कम कर देगा टेम्परेचर. बाहर लू चल रही हो 45 की, ये 25 या 20 कर देगा उसको. It will increase the moisture, it will increase the shade inside it, which will helpful for many organisms to come. अब फिर बात आती है, सर ने बताया, अमित सर ने, योगी जी ने कहा एक पेड़ माँ के नाम. बहुत अच्छा प्रोग्राम है. इसको मैं 2 स्टेप और आगे बढ़ा दूं. मैं उत्तराखंड से हूं. उत्तराखंड में एक कम्युनिटी है, जब बिटिया की शादी होती है वो जाती है तो उसके साथ उसको पेड़ भी देते हैं. इस गांव का पेड़ देते, कहते हैं वहां जाके लगाना. सिमिलरली देयर इज यू, आप ढूंढिए, आप बहाना ढूंढिए प्लांट लगाने का. जिस दिन आपका जन्मदिन हो, जिस दिन आपके बच्चे का जन्मदिन हो, जिस दिन आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो, जिस दिन कोई फंक्शन हो, पौधा लगाइए. फिर पौधा भी क्या लगाऊं, पौधा कौन सा लगाएं? अब इसमें भी फलदार पौधे होते हैं और कुछ पौधों को कहते हैं दे आर की स्टोन स्पीसीज. की स्टोन स्पीसीज क्या है? विच इंक्रीज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट ए पर्टिकुलर एरिया. आपने बरगद का पेड़ लगाया, आपने जामुन का पेड़ लगाया, तो क्या होगा? उसको खाने के लिए दूसरे जानवर आएंगे, वो नीचे गिरेगा, उस पर और माइक्रोऑर्गेनिज्म आएंगे. तो यूकेलिप्टस नहीं लगाना है. यू गो फॉर ट्रीज, फलदार लगा लीजिए, छायादार लगा दीजिए, लेकिन लगाइए जरूर. सो मेरा केवल ये कहना था, एक पेड़ नाम के अलावा वी कैन गो फॉर प्लांटिंग मोर ट्रीज. हम बहाने ढूंढे ज्यादा पेड़ों को लगाने के लिए, उसका बहाना यही है. और इन्हीं शब्दों के साथ में और थोड़ा सा आप स्टूडेंट से सारा करना चाहता हूँ. स्टूडेंट्स जब MSc कर लेता उसके बाद ही थिंक अबाउट रिसर्चेस, एंड नाउ डेज एवरीबॉडी वाज थिंकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर और बायोटेक्नोलॉजी की बात करता है वो. बट हाउ रिसर्चेस दे स्टार्ट? First, you try to go for local problems. If is it possible that you can solve some local problem research, that is good, and it depends on the sources or the infrastructures which you have. क्यों? क्योंकि मॉलिकुलर और बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्चेस बहुत पैसे लगते हैं, बहुत महंगी हैं. You should try that. You should come out with some researches which are of local, which are of regional problems, and they may be related with water, they may be related with environment, they may be related with air, they may be related with agriculture or even the health. This is the way how you proceed. First you start working on local problems. I am really happy. I frequently visit this department and I see the efforts of Dr. Professor A.P. Singh, how he is involved. Every year he asks us, Doctor, please come, and we will organizing this event. So we are always be here. एक और मैं which I have observed, और क्या आप लोगों ने भी देखा होगा, और क्या आप अपने लेवल पे उन लोगों को समझाइएगा. खुमचे पे चाय की दुकान आप लोगों ने देखी होंगी, और जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादातर सिक्योरिटी वाले हैं, हाउ दे कैरी दैट चाय, गरम खोलती हुई चाय को पॉलिथीन में ले जाते हैं. क्या कह सकते हैं आप?
आज कहिएगा, 4 लोगों से जाके आज कहिएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन जा रहे हैं, कहीं भी दिखता उसे कहिए बेटा कैंसरस है, मर जाओगे, इसके अंदर बहुत केमिकल्स हैं। इवन आज का अगर हम चाहें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम ये आप प्रतिज्ञा करें, कम से कम हम 2-4 लोगों को ये समझा दें पॉलीथीन में गर्म चाय मत पीना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल देखता हूँ पुराने लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार, धन्यवाद। लखनऊ के सर हम लोगों ने जितने एवेन्यू ट्रीज हैं वो एनबीआरआई हम ही लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं पूरे प्लांट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। To read out the citation going to be presented to the chief guest, sir, Anurag sir. नहीं सर, वो सीरियस It's a great honor to read out the citation to be presented to Ramesh sir. Prashasti Patra presented with profound appreciation to Mr. Ramesh Sharma, IPS, Additional Director General of Police, Bareilly Zone. On this August occasion of the International Conference on Environmental Issues and Challenges organized by the Department of Environmental Science, Bareilly College, Bareilly, we are deeply honored to acknowledge the gracious presence and esteemed participation of Mr. Ramesh Sharma, IPS, as the chief guest. Your enlightening address and insightful reflections have significantly enriched the intellectual environment of this conference. Your unwavering dedication to public welfare, coupled with visionary approach to environmental and social concerns, stands an enduring source of inspiration for all the attendees. A highly decorated and respected officer, Mr. Sharma has exemplified integrity, innovation, and leadership throughout his distinguished career. During your tenure as a police commissioner of Prayagraj, you earned national recognition for your pioneering integration of technology into modern policing. The AI-based digital initiative Pro-Jarvis in Bareilly under your leadership marked a major step forward in smart governance and citizen-centric policing. In recognition of your exemplary service, dynamic leadership, and steadfast commitment to duty, Mr. Sharma has been honored with several prestigious accolades, including the President's Medal for Distinguished Service and the Utkarsh Seva Medal. With deepest gratitude, admiration, and respect, we are privileged to present this citation of honor as a token of our sincere appreciation. Professor A.P. Singh. Thank you, Bareilly sir. His felicitation to Ramesh Sharma. Thank you, sir. Thank you very much. So now the time to collect the memories of the unforgettable moment. I would like to call Professor Gausia ma'am
from AMET Department to present a memento to Professor Dr. D.Q. Preti, sir. President. I invite Professor Pratibha Sharma ma'am, Head Department of AMET, to present a memento to our keynote speaker, Dr. Anand Gupta, sir. Thank you, ma'am. Thank you, sir. I would like to invite Dr. Gaurav Bhushan, sir, Associate Professor, Department of Environmental Science, to present a memento to Dr. Puneet Khare, sir. Thank you, sir. Before it's too late, don't wait till 2050, when our oceans will have become veritable bins. A commitment to combating plastic pollution and other environmental issues require a strategic part of every one of us. Please come together to cope up with all these issues. Approaching to the end of this inaugural session, I request Dr. Anamika Agrawal for this seminar vote of thanks. Thank you, ma'am. Respected Chairperson, Professor Dr. D.Q. Preti, Chief Guest, Mr. Ramit Sharma, IPS, Distinguished Guest, Mr. Puneet Khare, Keynote Speaker, Dr. Anand Gupta, Conference Convener, Dr. A.P. Singh, all esteemed speakers, research scholars, participants, and invited guests, warm greeting to you all. On behalf of the Department of Environmental Science, Bareilly College, Bareilly, I extend my heartfelt gratitude to each one of you all making this international conference a meaningful and successful event. It is a matter of great pride for us that Dr. Anand Gupta's thought-provoking address gave us a new perspective on critical environmental issues. The scholarly guidance of conference chair, Dr. D.Q. Preti, has been truly inspiring for all of us. The esteemed presence of Chief Guest, Mr. Ramit Sharma, added great value and significance to the conference. We also extend our sincere thanks to Dr. Puneet Khare, who graciously accepted our invitation and graced the occasion with their presence. Dr. A.P. Singh, Director of the Self-Finance Department, as the Organizing Secretary, your dedication, diligence, and foresight in designing and executing this event are truly commendable. Your active role gave this event its successful dimension. The members of the organizing committee worked tirelessly for several days to ensure the success of this conference. I express my heartfelt thanks to all the participants, guests, research scholars, students, and technical support team, without whose contribution this event would not have been possible. Thank you to all. Thank you, Anamika ma'am. Now we all will proceed for national anthem. After that, we will have sumptuous lunch and reassemble sharp by 2:30. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल
जल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे आज पर्यावरण दिवस 5 जून विश्व में मनाया जाता है। इस साल का थीम है प्लास्टिक को कैसे रोका जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक। हम अगर देखें तो प्लास्टिक के बगैर काम भी नहीं चल सकता। हमको अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा। इस जमाने में रोकना उचित कदम नहीं है, क्योंकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, जिसको बैन करना कई सालों से चल रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो हमको अवेयरनेस जब तक कैंपेन नहीं चलाएंगे तब तक ये बंद नहीं हो सकता है। जिस तरह से कोरोना काल में लोग भयभीत थे, चीज़ों से डरते थे, उस तरह से आने वाले समय में अगर पर्यावरण के लिए हम नहीं सोचेंगे कि कैसे इसको हम अपने चारों तरफ के वातावरण को मेंटेन करें, तब तक क्योंकि हमारा 3 चीज़ों की हमारे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, हवा, पानी और खाना। सबसे ज़्यादा हम हवा खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, फिर खाना की ज़रूरत पड़ती है। हम तीनों चीज़ों से जो है हम लोग परेशान हैं। अवेयरनेस, चूँकि हमको अवेयरनेस अब चलाना ही पड़ेगा, और इसको जिस तरह से बाढ़ में आदमी वर्क करता है जब आदमी सर्वाइवल के लिए, उस तरह से हम बार फुटिंग पे जो है इस चीज़ों को चलाएंगे कि किसी भी देश का जो है डिपेंड करता है उसके स्वास्थ्य पे। तो अगर देश में हमारे स्वास्थ्य प्रक्रिया अगर गड़बड़ होती है, स्वास्थ्य लोगों का खराब होता है, तो विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि जो है माइंड सेट जिस तरह से कोरोना में डिस्टर्ब था, तमाम चीज़ें पीछे चली गई, 2 साल 3 साल पीछे चली गई। तो हमको अपने सर्वाइवल के लिए छोड़ना है और अवेयर करना है। इसमें तो सबसे हमको शुरू से एक बात नज़र आती है कि हम बड़े लोग ज़्यादा इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, छोटे कम करते हैं। बड़े लोगों का मीन्स क्या है, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ वेस्ट कम जो है निकलता है, जो निकलता है वो डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। फॉरेन में अगर 4.5 kg पर हाउस निकलता है, हमारे यहाँ 2.5 kg निकलता है। लेकिन उनके यहाँ चीज़ों का अवेयर हो गया है, तो कैसे उनको हम रिसाइकिल करें। तो हम रिसाइकिल की बात करेंगे, क्योंकि रिसाइकिल में कास्ट फैक्टर आता है। क्योंकि एक हमारे यहाँ कभी कभी इकोनॉमिक्स हमको जो है पीछे ले जाती है। रिसाइकिल्ड मटेरियल जो है कास्ट ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट पे जल्दी नहीं, इकोनॉमिक्स कहते हैं, रिसाइकिल पे न जाएं। कुल मिलाकर हमारा सिर्फ ये कहना है कि अवेयरनेस कैंपेन ही एक ऐसा चीज़ है जो हम हेल्थ से जोड़ करके जब तक लोगों को नहीं समझाएंगे, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। जब हेल्थ पर पड़ता है तब आदमी को समझ में आता है। जब तक हम हेल्थ से नहीं जोड़ेंगे तो यहाँ पे रहते हैं।
आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुझे केवल ये संदेश देना है कि इस जो छात्र है, जो आज का शोध छात्र है, वो कुछ ऐसी जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का विकास करें या उन पर अनुसंधान करें जिसके द्वारा हम तीव्र गति से जो प्लास्टिक हम लोग का रिसाइकिल कर सकें। या जैसे प्लास्टिक का क्या होता है कि बहुत दो तरह के प्लास्टिक प्रोड्यूस होते हैं, एक प्लास्टिक सिंगल यूज़ है और एक रिसाइकिल्ड है। पूरे विश्व का अगर हम प्लास्टिक देखें तो केवल उसमें 9% प्लास्टिक ही ऐसा है जिसको हम रिसाइकिल्ड कर सकते हैं। 91% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल्ड नहीं होता है और वो अपने आप प्रकृति में टूट कर या उसका कह लेंगे उसका डिग्रेडेशन होकर वो समुद्र में चला जाता है। इवन अभी ये पाया गया है कि समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के मस्तिष्क में भी ये प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पहुंच चुका है। हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? हम यही कर सकें कि आम जो जनता है, आम नागरिक है, उसको हम कहें कि आप प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। एक सिंपल सा, एक बहुत ही साधारण हम राय दे सकते हैं। सब्जी खरीदने जाओ, राशन खरीदने जाओ तो केवल कपड़े का झोला लेके जाओगे तो वो पॉलीथीन आपको नहीं देगा। ऐसे कम कर सकते हैं। तो ये हम आम जो जनता है, वो आम जनता प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए कुछ उपाय खुद कर सकती है। वो उपाय एक साधारण सा उपाय है कि आप जब बाजार सामान खरीदने जाएं, कपड़े का झोला ले जाएं। लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है। देख, पेड़ों के कटान से प्लास्टिक के ऊपर तो नहीं प्रभाव है, लेकिन उससे क्या है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं या जो तापमान है, तापमान में वृद्धि, जैसे मैंने कहा था कि एक अगर बहुत घना वृक्ष है बरगद का तो वो तापमान जो है उसको 20 डिग्री कम कर देता है, एक एसी की तरह काम करता है और इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि कोई और पौधा नहीं कर सकता। तो उस पौधे भी हम वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण के लिए भी जैसे हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है, एक पेड़ माँ के नाम। इसी को मैं और एक स्टेप और आगे मैंने ये कहा है, माँ के नाम बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी हम समय ढूंढें, उसके अलावा भी हम बहाना ढूंढें पेड़ लगाने का। जिस दिन हमारा जन्मदिन हो, जिस दिन हमारे किसी और कोई अच्छा कार्य हो, उस दिन हम उसको उत्सव की तरह मनाएं कि हम एक वृक्ष लगाएं। क्या कहना चाहते हैं? आज विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर बरेली कॉलेज के प्रांगण में एक इंटरनेशनल सेमिनार एनवायरमेंटल चैलेंजेस और इश्यूज पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न डिसिप्लिन, मल्टी डिसिप्लिन के लोग आए और छात्र हैं, अलग अलग फील्ड से एसोसिएटेड लोग हैं जिन्होंने इस सेमिनार में प्रतिभाग किया है और अभी शुरुआत हुई है। 2 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा। इसमें सभी को अवेयर करने पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब हैं, प्रोफेसर ए.पी. सिंह साहब, और इसी के अंतर्गत आज मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, जिसमें सभी को जो हम लोगों की तरफ से एनवायरनमेंट के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं उनके संबंध में बताया गया। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम है उसके संबंध में लोगों को बताया गया और लोगों से अपील की गई कि सभी लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वृक्षारोपण करें, अपने माँ के नाम पे भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए पेड़ लगाएं और अधिक से अधिक पौधारोपण हम लोग करें, जिससे कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। बहुत सारे विषय पे और बहुत सारे डिसिप्लिन्स पे ये कार्यक्रम जारी रहेगा और इसमें सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार में शोधकर्ता और अन्य लोग सभी अपना अपना कार्य प्रस्तुत करेंगे और लोगों में अवेयरनेस का कार्यक्रम कराएंगे। अभी तो सुनेंगे और दूसरा आना पड़ाऊंगे और बात आज की हमारी कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर लंच हुआ है ना भैया? इंटरवल हुआ है। अभी लंच हुआ है हमारी कॉन्फ्रेंस का।
हम वहाँ पर लाइव आ रहे हैं। अभी 2:30 बजे फिर से हमारी कॉन्फ्रेंस जो है स्टार्ट होगी, पुनः स्टार्ट होगी। तो अभी के लिए हम यहीं पर लाइव को ख़त्म करते हैं। 2:30 बजे दोबारा से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट सेशन के साथ 2:30 बजे दोबारा से मिलें। धन्यवाद। कैमरामैन अभिषेक गौतम के साथ उनके साथी प्रदीप राणा और नितिन सिंह और हमारे साथी दिनेश कुमार। धन्यवाद। इन कर दूँ।